हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज एनर्जी हाउ थिंग्स वर्क के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव लेट्स let us observe kitchen for some time। ठीक है, हमें किचन को ऑब्जर्व करना है कुछ टाइम के लिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड इन द टेबल गिवन बिलो। सो जब आप किचन में रहते हो, किचन में ऑब्जर्व करते हो, सो व्हाट क्वेश्चंस कम्स टू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द फूड इज गेटिंग कुक्ड, फूड कुक हो रहा है। Then I wonder how is it being cooked? पहले आपने देखा कि खाना बन रहा है, देन आपके दिमाग में क्या आया कि खाना कैसे बन रहा है, राइट? Then I observe the stove is producing heat। जो स्टोव होता है, जो हम खाना बनाने के लिए गैस स्टोव यूज करते हैं, that is producing heat। Then I wonder where does the heat come from? ना, आपके दिमाग में आएगा कि हीट कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट, द रेफ्रिजरेटर इज कूलिंग थिंग्स। ना, आप रेफ्रिजरेटर में आप जब कुछ रखते हो, इट गेट्स कूल्ड, ना ठंडा हो जाता है। देन आई वंडर हाउ डज इट मेक थिंग्स कूल। रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा कैसे करता है। नेक्स्ट, आई ऑब्जर्व द मिक्सर इज मेकिंग अ साउंड। ना, मिक्सर ग्राइंडर हम चलाते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ अ साउंड। देन आई वंडर हाउ डज इट प्रोड्यूस साउंड। ना, आपके दिमाग में आता है कि ये साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है, बिना साउंड प्रोड्यूस किए क्या ये ग्राइंड नहीं कर सकता। सो लाइक दिस यू कैन ऑब्जर्व इन द किचन एंड यू कैन राइट योर ओन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, बट इफ यू नोटिस समथिंग एल्स यू कैन राइट योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट। So next question here we have, from your observation, write down at least 3 things that you have noticed. So based on your observation, आपको 3 चीजें ऐसे लिखनी है that you have noticed moving. ठीक है, आपने किचन में ऑब्जर्व किया, so you have to write 3 things that you have noticed like moving. So क्या चीज मूव करता है? So a fan, bicycle, a moving car. ठीक है, प्रोवाइडिंग लाइट, सो अराउंड योर सेल्फ, आप अपने चारों तरफ देखो, दैट इज प्रोड्यूसिंग लाइट, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सो अ बल्ब, अ टॉर्च, द सन। ठीक है, मेकिंग साउंड, सो आप देखो आपके चारों तरफ विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड। सो अ रिंगिंग बेल, ना, अ टेलीविजन, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे ऑल प्रोड्यूस साउंड। मेकिंग थिंग्स कूल, सो चीजों को ठंडा कौन रखता है? सो अ रेफ्रिजरेटर, राइट, an air conditioner, a cooler, okay? Making things hot, चीजों को गर्म, so a stove, an electric iron, a heater. ठीक है, next, what makes things move, shine, make a sound or get warm and cold? सो वो कौन सा चीज है जो चीजों को मूव करने में हेल्प करता है, शाइन करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, चीजों को गर्म ठंडा करता है? सो इट इज द एनर्जी, ना, इट इज द एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स मूव, शाइन, मेक साउंड एंड बिकम वार्मर और कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट। सो this activity we have done while I was explaining the chapter. We have done this activity. So there is a question to this activity. So what could you change in the activity to make the toy move faster or slower? So ये activity क्या है? So आप देखो इस activity में क्या करना है? So you have to take a balloon and you have to fill the balloon with the air. ठीक है? And you don't have to tie. आपको tie नहीं करना है. Then what you have to do is that, so here you can put a straw, ठीक है, and with the help of a sellotape you can stick that straw, और straw के बीच से आपको एक क्या करना है, एक string पास करना है, एक धागा पास करना है। ठीक है, now you have blown the balloon, आपने बलून को फुला दिया है हवा से। ठीक है,
Now you don't have to tie. Now what you do is that you release the balloon. आप balloon को ऐसे छोड़ दो. You'll find that the balloon move faster. ना balloon will fly. ना वो एक तरीके से आप देखोगे कि बहुत रॉकेट की तरह वो उड़ेगा. ठीक है? So uh, the rock the balloon will fly like a rocket. Now अगर आप चाहते हो कि balloon को थोड़ा और तेजी से move कराया जाए तो आप कैसे कर सकते हो? सो इफ यू फिल मोर एयर, जितना ज़्यादा आप हवा इसमें डालोगे ना उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आप जब इसे छोड़ोगे इट विल मूव वेरी फास्ट. ठीक है? सो द क्वेश्चन इज व्हाट could you change in the activity to make the toy move faster or slower? So ये एक रॉकेट की तरह लगता है ना, जब आप छोड़ते हो it moves like a rocket. So अगर आप इस टॉय को और भी ज़्यादा तेज उड़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? So to make it move faster, we can fill the balloon with more air. अगर आप balloon में ज़्यादा air fill करोगे, it will move faster. To make it slower, we can fill it with less air. अगर आप इसे slow down करना चाहते हो, then you can fill less air. Okay? Next. So the next question is, so it's based on this activity. So again, this activity also I have explained during the explanation. So what you have to do is that you have to take a matchbox आप लिख सकते हो, ठीक है, empty matchbox, and you can tie a rubber band. ठीक है, इसके ऊपर आप rubber band tie कर दो. And when you pull this rubber band, okay, when you pull this rubber band, you'll find that it produces some sound. ठीक है, the rubber band will vibrate and it produces sound. So rubber band will produce a sound. Now when you change this rubber band, अगर आप rubber band को change करते हो, you are using a thin rubber band or you are using a thick, ना आप मोटा या पतला rubber band use करोगे तो आप देखोगे कि in each of the situation it produces different type of a sound. If you are using a thick rubber band, it will produce some different sound. If you are using a thin rubber band, it will produce some different sound. Okay, so based on that, we have a question. What happens if you use a thinner or a thicker rubber band? Do they sound different? So do they produce different sound? So yes. So when you use different kind of a rubber band, a thinner or a thicker rubber band, the sound produced will be different because they vibrate differently. हमने पढ़ा था ना, how the sound is produced. Sound is produced due to the vibration. जहाँ कभी कहीं भी vibration होगा ना, there the sound will be produced. So when you are using a thinner or a thicker rubber band, the vibration will be different in both the cases. ठीक है? And because of that, it will produce different types of a sound. Got it? Next. So based on this activity, so here this is an activity where you have to place two cups. You have to take two cups filled with the water. One cup you have to put it in the sunlight and the other in the shade. So आपको दो ग्लास में पानी लेना है. एक ग्लास को आपको सनलाइट में रख देना है. You can put it in balcony और टेरेस जहाँ पे भी धूप अच्छी आ रही हो. And the other glass you keep it in the shade. ठीक है? After 15-20 minutes, go and touch both the water. What do you notice? The water which you have kept in the sunlight, it will be little warm. ठीक है, वो थोड़ा गर्म होगा. But the one which you have kept in the shade, it will be cooler. ठीक है, वो ठंडा ही रहेगा. So it means because of the sun heat, the water gets warmed up. Okay, so this shows that the sunlight gives us heat energy. The sunlight क्या देता है हमें? It gives us heat energy, and because of that the water gets warmed up. वो गर्म हो गया. Now based on this we have a question. So what do you notice? So आपने क्या notice किया जब आपने दोनों ग्लास में पानी रखा, one in the sunlight and the other in the shade? The water kept in the sunlight becomes warmer than the water kept in the shade. ना? So जिस ग्लास में हमने पानी जो रखा था वो धूप में रखा था, सनलाइट में, it was warmer. ठीक है, than the water kept in the shade. Okay. Next. How is food cooked in your house? आपके घर में खाना कैसे बनता है? So
Food is cooked using cooking gas, that is LPG. ना हमारे घर में LPG गैस होता है and on that we cook the food. But in sometimes so we use electricity also to cook our food, or a wood or a coal or even a biogas can also be used to cook the food. ना किसी के घर में electricity use हो रहा होगा खाना बनाने के लिए, या फिर wood या coal या फिर biogas. Okay. Next question here we have, what kind of a fuel do you use at home for cooking? So it is the, we use cooking gas, that is LPG, for cooking food. What are the problems of using too much of a wood or a coal? अगर आप बहुत ज़्यादा wood या coal का use कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, so for cooking or to generate electricity, so what is the problem? So the problem is burning too much of a wood or a coal causes smoke and air pollution. ठीक है, क्योंकि आप इसे जलाते हो तो it produces a lot of a smoke which causes air pollution and can harm the environment. ना हमारे environment को ये harm कर सकता है. Next, understanding how fuel works. So here we have a activity. So here we have to take two diya. This activity also I have explained during the explanation of the chapter. So here you have to take two diya. So एक दिए में आपको क्या करना है? You have to in the both diyas you have to place the cotton wick. दोनों दिए में आपको cotton wick रखना है. But in one diya you have to pour some oil. ठीक है, आपको ऑयल डालना है, बट इन द अदर यू डोंट नीड टू पुट एनी ऑयल, जस्ट द कॉटन वीक. ठीक है, सो आपको दो दिया लेना है एंड इन वन you have to just put the cotton wick without any oil. In the other diya you have to put cotton wick along with some oil and you light both the diya. ठीक है, आपको दोनों दिए को जला देना है. So now after some time what you will observe, which diya will burn longer? So yes, it is the diya 2 which has the oil in it will burn for a longer time because the oil acts as a fuel. ठीक है? So based on this we have a question. So which diya burns longer? So it is diya 2 burns longer because it has oil which acts as a fuel. ठीक है? What is acting as a fuel here? So it is the oil which is acting as a fuel. जैसे vehicle कैसे चलती है? So it uses petrol, diesel, which is an oil, and this oil acts as a fuel, and because of this fuel, the vehicles run. Similarly, here also the oil is acting as a fuel, and because of this, the diya is burning for a longer time. ठीक है? जब तक oil दिया में रहेगा, it will burn. Next. What are the things in your home that need electricity to work? आप देखो आपके घर में बहुत सारे ऐसे gadgets होंगे, बहुत सारे ऐसे equipments होंगे which need electricity to work. Without electricity, it will not work. So you have to list some items from your home that need electricity to work. So for example, fan. आप देखो जब electricity होता है तभी fan move करता है. Lights, television, refrigerator, washing machine, mixer and many other appliances, they need electricity to work. ना इन सबको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? Electricity. Without electricity, they will not work. Okay. Next. Walk around your home or a classroom. Identify 5 things that run on electricity. So आपको अपने घर में या फिर आप क्लासरूम में आप just find out 5 things that run on electricity. So ऐसे 5 चीजें जो electricity से ही run करती है. Without electricity it will not run. ठीक है? So fan, so it blows air and what it requires. So light, sound, heat, movement, cooling. So when you provide electricity, जब आप इसमें electricity जाता है तो क्या होता है? What it does, क्या करता है? It produces air, no? And there is a movement. ना fan के blades क्या करते हैं? Move करते हैं जब electricity pass होता है तो, right? Bulb क्या करता है? It gives light, ठीक है? It gives light and it producing light, ठीक है? Television.
सो टेलीविजन प्रोड्यूसेस पिक्चर एंड साउंड. आप टेलीविजन पे मूवीज एंजॉय करते हो, कार्टून एंजॉय करते हो, राइट? सो इट प्रोड्यूसेस पिक्चर एंड साउंड. सो इट इज गिविंग लाइट एंड साउंड. रेफ्रिजरेटर. सो रेफ्रिजरेटर व्हाट इट डू, इट कीप्स थिंग्स कूल ना, चीजों को ठंडा करता है. एंड what it do, it just cools the things. Electric iron, so it makes clothes smooth ना. इलेक्ट्रिक आयरन से आप क्या करते हो, चीजों को स्मूथ कर लेते हो, क्लोथ्स को स्मूथ कर लेते हो, राइट? सो इट प्रोड्यूसेस हीट. Then mixer grinder. So what this does, so mixer grinder grinds and mixes the food. So when you pass the electricity, what it do, it produces the movement and the sound, no? Movement, the blades move and it produces sound. Okay, so next, from the above example, did you notice that electricity can be used for movement, for producing sound, light and heat, no? सो आप देखो कि यहाँ पे जितने भी चीजें हैं, सो व्हेन यू आर passing the electricity, the fan is moving, the bulb produces light, television produces light and sound, the refrigerator is cooling, electric iron gets heat, right? And mixer grinder, it by passing the electricity, there is a movement and the sound is produced, right? So can we say that electricity can be used to produce movement, sound, light and a heat? क्या हम कह सकते हैं कि electricity can produce movement, ना, sound, light and a heat, right? Next, what could your day be like if there was no electricity at all? So just imagine there is no electricity at your home for a day. So आपको कैसा feel होगा? What you will do? So without electricity, fan, light, TV, refrigerator, washing machine would not work. ना, इन सबको electricity चाहिए होती है, और electricity नहीं है, all appliances will not work. It would become difficult to study at night. ना, रात के टाइम में पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा. Cook with electrical appliance. ना, अगर आप cooking भी electric appliances के थ्रू कर रहे हो, like a microwave और we have a electric gas stove, तो खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा. और चार्ज फोन ना, we cannot charge our phone without electricity. Next, place a small damp cloth in the sun, keep another damp cloth in the shade. Which one do you think will dry first and why? So आपको क्या करना है, एक गीला कपड़ा धूप में रख देना है, ठीक है, in the sunlight, and the other a damp cloth in the shade, ठीक है. एक गीले कपड़े को आपको धूप में रखना है और एक को शेड में रखना है. So what do you think that which one will dry first? कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा and why? So the sun gives heat energy which makes the water in the cloth evaporate. ना, sun से क्या मिलता है हमें? It gives us heat energy which will make the water in the cloth evaporate. जो भी पानी क्लोथ में होगा ना, that will evaporate faster. But in the shade, जो कपड़ा आपने शेड में रखा है, there is less heat. ना, हीट कम है, so the water evaporate slowly. ना, पानी evaporate होगा but it is very slow. And the clothes take longer to dry. काफी टाइम लगेगा उसको सूखने में. But the one which is in the sunlight will dry faster. ठीक है? Next. So next question. What happens to your pinwheel? ना, so we have discussed ना, हमने pinwheel बनाया था during the explanation of the chapter. We have made a pinwheel, right? So what happens to your pinwheel? So the pinwheel starts spinning when the wind blows or when we run with it. So हमने एक pinwheel बनाया था. So when there is an air, it will move. And if there is no air, if you hold it, अगर आप इसे hold करके आप run करोगे, it will move. ठीक है? So why? Because the moving air has energy. So ऐसा क्यों होता है? Why the pin will move?
बिकॉज दिस मूविंग एयर हैज एनर्जी ना, ये जो हवा जो मूव कर रही होती है ना, इट हैज एनर्जी एंड इट मेक्स द पिनविल रोटेट। ठीक है, इसके पास एनर्जी है एंड इट मेक्स द पिनविल रोटेट ना। with the same technique we generate electricity with the help of the windmill। windmill से हम electricity generate करते हैं by using this moving air। ठीक है, moving air का use करके हम electricity generate करते हैं। Next is activity 7. Based on activity 7, we have this question. So this is where you have to take a paper and a magnifying glass. तो आपको क्या करना है? You have to focus the sunlight. Sunlight को आपको पेपर पे फोकस करना है। Okay? And you will find that after some time the paper will starts to burn। ठीक है? सो व्हेन आप जब सनलाइट की लाइट को आप पेपर पे जब फोकस करोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द पेपर स्टार्ट्स टू बर्न। सो व्हाई? So the paper becomes very hot and may start burning when the sunlight is focused on one point using a magnifying glass। So magnifying glass की हेल्प से आप sunlight को एक जगह फोकस कर सकते हो and all the heat is concentrated at one point. So after some time that paper becomes very hot and it may starts to burn। ठीक है? Why? The magnifying glass concentrate the sun heat energy। So अब normal glass से नहीं होगा, you have to take a magnifying glass because the magnifying glass क्या क्या करता है? It concentrate the sun's heat energy। So sun की heat energy को एक point पे concentrate कर देता है। ठीक है? And because of that it becomes so hot, the paper becomes so hot that it starts to burn। Now activity 8, there is a question based on activity 8. So this activity where you have to take a paper cup and you have to attach some spoon. So जब आप इसमें पानी डालोगे, this paper cup will starts to move like a wheel। ना wheel की तरह ये move करने लगेगा। Okay? So based on this we have a question. Does the water make the wheel move? So अगर आप पानी डालोगे उस wheel पर, will it move? So yes, the flowing water pushes the spoon and makes the wheel rotate। So जब आप पानी डालते हो तो क्या करता है ये? It pushes the spoon, जो spoon attached है ना paper cup में, it pushes the spoon and makes the wheel rotate। This shows that the flowing water has energy। So ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट द फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी एंड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन पापड़ being dried in the sunlight and the clothes hung out to dry? सो जनरली आप देखोगे कि पापड़ हम धूप में सुखाते हैं या फिर अपने गीले कपड़े को भी धूप में डालते हैं सो दैट इट कैन ड्राई क्विकली, राइट? सो यस, आई हैव सीन पापड़ being dried in the sunlight and the clothes hung out to dry। They are kept in the sun because the sun's heat energy helps the water in them evaporate quickly। So जब हम पापड़ या फिर गीले कपड़े को धूप में रखते हैं, so because of the sun heat ना, धूप की जो गर्मी होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी कपड़े में होता है या पापड़ में होता है, they evaporate quickly, बहुत जल्दी evaporate होते हैं, making the papads dry, जिससे कि पापड़ ड्राई हो जाता है and the clothes become dry faster। ओके, क्लोथ्स भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं बिकॉज ऑल द वाटर इवापोरेट बिकॉज ऑफ द सन्स हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर वी यूज द सन, the wind or flowing water? So can you think of some more example where we are using sun, wind or flowing water? So sun, like sun का use करके हम क्या करते हैं? We dry our clothes, we dry grains, drying पापड़, solar cooker, सोलर वाटर हीटर ना, छतों पे आप देखोगे सोलर वाटर हीटर होते हैं। सो बिकॉज ऑफ द सन हीट
the water gets heated. Wind. So आप देखो जब आपको पतंग उड़ाना होगा you need little air. ठीक है, जब हवा बहती है then you can fly the kite. So with the help of the wind you can fly the kite, sail the boats, windmill, flying paper planes, they all need wind. Flowing water. So with the help of the flowing water, we run water mills, hydroelectric power station, जहाँ हम electricity flowing water की help से generate करते हैं. Irrigation, water wheels. Okay, so here we use the flowing water. Next, list actions that you see in the picture above and fill in the following table. So आप देखो एक picture दिया गया है यहाँ पे and based on the picture you have to fill this table. So activity, a child carrying a school bag and ना एक बच्चा आप देखो he is carrying a school bag. ठीक है, school bag carry कर रहा है. And what is the source of energy? So the source of energy is food. Next, a car moving. What is the source of energy? It is the petrol or a diesel. Clothes drying. So how the clothes are getting dried? Because of the sun. Windmill rotating. Windmill कैसे rotate कर रहा है? Because of wind. Mobile charging. It's because of electricity. ठीक है? Next. So this is an energy flow game. So this is an energy flow game. So what you have to do is that you have to prepare paper slips with names or a picture of energy source. So आप पेपर पे आप छोटे छोटे पेपर स्लिप्स पे आपको एनर्जी सोर्स के नाम लिखने. फॉर एग्जांपल सन, विंड, वाटर, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी. Okay, then the second paper slip should indicate the type of energy. Now say different types of energy like heat energy, light, movement, sound. ठीक है. Next, the last paper slip should contain the uses. Now उस energy का कैसे use हो रहा है? Like for drying clothes, lighting a bulb, turning a turbine, cooking, running. ठीक है. So आपके पास तीन paper slips है. ठीक है. Now give each student one card where they will either be a source of energy, type of energy or use. So आपको एक paper slip हर student को देना है. So you can give the first one or a second paper slip or a third one which is a use. ठीक है. Now student के पास हर student के पास एक एक paper slip है. Now what the students have to do is that they have to walk around the class and try to find the two others who complete their energy chain. So हर student को अपना energy chain ढूंढना होगा. For example, if some student got sun, उसे ढूंढना होगा sun, from sun we get heat energy. So sun is the source. What type of energy you get? Heat energy. And what is the use? So the sun heat is used to dry the clothes, dry the grains. ठीक है. So like this they have to complete their energy chain. ठीक है. अब यहाँ पे तीन students आ गए. One is the source of energy, type of energy and the use. ठीक है. So like that they have to find their energy chain. For example, the source of energy is wind, the type of energy is movement and the use is turbine, move to make the electricity. ठीक है. So like that they have to find their energy chain. This is a fun game, you can try it. So like this you can have this energy flow game. So you can make these kind of a slips like a sun, type of energy heat, use drying clothes, source of energy sun, type of energy light, because from the sun we get heat and light both, and uses helps the plants to grow. Wind, it helps in the movement, turns windmill. Water, so with the help of water again there is a movement, it rotates the water wheel. Okay, electricity, uh, we get light, no? Light bulbs glow. With the help of electricity we can have this type of energy. Movement and uses runs a fan.
Fuel, so we get heat energy, and cooking, that is used for cooking food. Again, from the food we get the movement. Okay, and uh, by taking the food you just run, play. Okay, so like this you have to fill this energy flow table. Let us reflect. The first question: what will happen if there is no electricity in your house for a day? So just imagine कि आपके घर में एक दिन के लिए electricity नहीं है. So how you will spend your day? So without electricity, light, fan, TV, refrigerator, washing machine, mobile charger will not work, and daily work will become difficult, right? Next, why it is better to use solar or a wind energy instead of a coal? So this solar and a wind energy क्या है? ये cleaner source of energy है, right? So instead of the coal, we should try to focus on solar and wind energy, because the solar and wind energy are the clean sources of energy. इसमें कोई pollution नहीं होता. They do not cause air pollution and can be used again and again. So it can be used again and again, unlike coal. Coal तो हमारे पास बहुत limited में है ना. So if we are continuously using the coal, it will get over. Give two example where you have seen energy being stored. So आपको ऐसे दो example बताने हैं जहाँ पे energy is stored. So it is batteries. Batteries में क्या होता है? Energy is stored. ठीक है? And food in our body. So our body also stores energy. What is the one thing you can do at home to save energy? आप अपने घर में क्या कर सकते हो energy को save करने के लिए? I can switch off lights, fan and other electrical appliances when they are not in use. जब हम इसे use नहीं कर रहे, we can switch it off. Next, find out how many kilometers a vehicle travel per liter of petrol or a diesel. Ask about different vehicles. How will you compare them? So अब देखो different जो vehicles होते हैं 1 लीटर पेट्रोल में different distances cover करते हैं. For example, bike. So bike अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में it can move till 15 kilometer. Scooter with just 1 liter of a petrol or a diesel, it can just move 10 kilometer. Car with the 1 liter petrol diesel, it can just move 9 kilometer. Bus with the 1 liter petrol diesel, it can just move 8 kilometer per hour. So आप देखो कि हर vehicle 1 liter petrol में different distances cover करते हैं, right? So a bike travels the maximum distance using 1 liter of a fuel, while a bus travels the least. अब देखो bike 1 liter में 15 kilometer, but the bus just travels 8 kilometer in 1 liter of a fuel. ठीक है? Next, look around your home or a classroom. List any three objects that use energy and mention their sources of energy. So आपको ऐसे तीन objects के नाम बताने हैं that use energy and their sources of energy. Like example, fan. So what is the source of energy for fan? So it is electricity. Gas stove. So what is the source? It is the LPG gas. Bicycle. So bicycle is run by the human, right? So human energy we get from the food. Okay. Next, create and share. Draw a or make a simple plan of a clean energy home that uses solar, wind or any other sources of energy. So आप घर में कैसे clean energy का use कर सकते हो? By taking the help of a solar, wind, okay, or any other source of energy. How you can uh, use the clean energy at home. So घर पे हम क्या कर सकते हैं? So a clean energy home may include हम घर पे क्या कर सकते हैं? We can use solar panels on the roof. ना solar panels अगर घर की छत पे लगा दें, then it will provide that much of electricity which is sufficient to run all the appliances at home. घर में जितने appliances है ना, उतना चलाने के लिए that much of electricity it can produce. Then instead of that fluorescent bulb, you can use LED bulb का use कर सकते हो.
लार्ज विंडोज फॉर नेचुरल सनलाइट, ना हम नेचुरल लाइट का मैक्सिमम यूज करें इंस्टेड ऑफ लाइटिंग द बल्ब, ना बल्ब की जगह हम नेचुरल लाइट का मैक्सिमम यूज करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सो दैट वी कैन यूज द, don't waste the rain water ना. Trees around the house, we can plant lot of trees. ठीक है. We could use solar water heater instead of normal geyser which run on electricity. We can use solar water heater. ठीक है. So this way, these are the very simple way how we can have the clean energy at home. ठीक है. Next. Make my energy diary for one day. Record the number of times you have used the electricity, fuel and so on. So आपको एक energy diary बनानी है and you have to list down that how many times you have used the electricity or a fuel. ठीक है. For example, 6:30 am you brush the teeth and energy used is water. कौन सा energy आपने use किया? Water. 7 am cooked breakfast ना, breakfast ने आपने breakfast prepare किया and you used LPG gas. 8 am went to school and food was the energy. So you might have used a bicycle. So आपका कौन सा energy लगा? The energy which was stored in your body, and that energy you got from the food. 4 p.m. watched TV and it was electricity. 6 p.m. studied under LED light and it was electricity. 8 p.m. cooked dinner and it was again LPG gas. 10 p.m. switched off light and slept and electricity saved. Okay, so this is how you have used the different types of energy throughout the day. Okay, so this was the last question. So we have done all the question answer of this chapter, but still if you have a doubt, please ask your question in the comment. So see you in the next class. Till then, bye, take care, and don't forget to subscribe to the channel for more such video. Bye, take care.